Hello aspirants, welcome to Bureauflex. So before we start, let me ask you some quick questions. Can you quickly point out Belize or El Salvador on a map? Or have you ever heard about Darien Gap? If not, don't worry. Today, in this second lecture of our world mapping series, we will deal with Central America and Caribbean island nations. We will try to master this area in around 10 minutes. Okay, so this won't be a very long lecture like the previous one. South America हमने 24 minutes में cover किया था, and this will be approx 10 minutes lecture because this area is something जो कि हम usually ignore कर देते हैं with respect to our exams because we don't know कि इससे क्या questions आएंगे, कैसे आएंगे, and what to leave and what to learn. Here's one question which came in UPPSC 2021 exam prelims. So this was the question that which of the following islands is not located in the Caribbean Sea? Grenada, Montserrat, Madeira, Anguilla. So I don't know if you have ever heard about these islands or not. For me, it was very new, but then when I studied about this Caribbean Sea, it is a very easy question. Like you won't even need 10 seconds to answer this. Okay, so we will deal with Caribbean island nations and then we will come back to this question. Okay, so let's quickly start with our lecture. Okay, this is the map of Central America and Caribbean island nations. This area you can see is Central America and this is Caribbean island nations. So we have already dealt with South America and this area is North America in which we have Canada, US and Mexico. So this strip of land which you are seeing, this consists of 7 countries and together they form a link between North America and South America. So first of all, we will deal with the countries and their capitals because capital ultimately becomes important in match the following questions. So first is Belize. Belize की capital है Belmopan and it is easy to remember because Bell दोनों में आप देख सकते हो. Okay. Then Guatemala same name की इसकी capital है Guatemala City. हॉन्डुरास की थोड़ी ट्रिकी है टेगुसी गल्पा तो आप इसको टेगुसी से याद रखो ओके जस्ट रिमेम्बर कि हाँ इस तरह का नाम होगा तो हॉन्डुरास की कैपिटल है एल साल्वाडोर अगेन सैन साल्वाडोर 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 दोनों में है निकारागुआ की कैपिटल है मानागुआ काफी राइम कर रही है निकारागुआ मानागुआ ओके सो इजी टू रिमेम्बर देन कोस्टा रिका की कैपिटल है सैन होजे पनामा की अगेन इजी पनामा सिटी ओके सो दीज वर द कैपिटल्स एंड इसमें आप एक चीज देखो कि जितने भी हमने कंट्रीज पढ़े हैं आउट ऑफ 7 5 इज शेयरिंग बॉर्डर विद बोथ कैरिबियन सी ऑफ अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन सो एज ए होल हम ये कह सकते हैं इधर अटलांटिक ओशन है बिकॉज कैरिबियन सी वी कैन कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन एंड ये पैसिफिक ओशन है तो सारे कंट्रीज चाहे वो ग्वाटेमाला हो हॉन्डुरास हो निकारागुआ कोस्टारिका पनामा दे शेयर बॉर्डर विद बोथ पैसिफिक एंड both Atlantic and Pacific Ocean. There's only two countries that is Belize जो कि कैरिबियन सी की तरफ बॉर्डर करता है इट डजंट हैव बॉर्डर टुवर्ड्स पैसिफिक एंड एल साल्वाडोर जो कि बस पैसिफिक ओशन की तरफ ये बॉर्डर करता है ओके सो दीज टू कंट्रीज का थोड़ा ये यूनिक फीचर है ओके नाउ there were the out of these countries there were some which were in the news okay for example Belize news में था because it was declared malaria free 2023-24 के एंड में Belize was declared malaria free then secondly Nicaragua so usually ये human trafficking वाला एरिया है because इसको ना डंकी रूट कहते हैं आपने आई गेस सुना होगा एंड इस पे मूवी भी है तो डंकी रूट इज लाइक जब आप इलीगली यूएस की तरफ आप एंटर करना चाहते हो तो द रूट यू टेक यूजुअली इंडियंस का अभी एक प्लेन था so the flight was caught in France and it was bound towards Nicaragua and it had certain Indians who were trying to illegally enter US via this route. So that's why Nicaragua was in the news and it's clear now. Okay. Then Darien Gap. Okay, हमने before proceeding towards Darien Gap, um,
पनामा हम जानते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा हमने काफी बार स्कूल के टाइम में भी सुना है। तो इस्थमस ऑफ पनामा इज यूजुअली इट कनेक्ट्स नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो इस्थमस अगर हम डील करें तो व्हाट इज इस्थमस? फर्स्टली वी शुड नो दिस थिंग बिकॉज इट्स वेरी बेसिक। तो इस्थमस कभी भी वर्ड आए ना तो जस्ट रिमेंबर दैट इट इज a narrow strip of land. Okay, it is a strip of land which connects two land masses. तो पनामा में जो isthmus of Panama है, it is a strip of land and it's connecting two land masses which is North America and South America. Similarly, एक वर्ड होता है straits. हमने पार्क स्ट्रेट सुना है विद रेफरेंस टू आवर इंडिया एंड श्रीलंका। तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा है। सो एज वी नो दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स, ये पूरा यूनाइटेड स्टेट्स है एंड ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है। तो यूनाइटेड स्टेट्स एंड क्यूबा के बीच में स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा है। तो व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेट जस्ट रिमेंबर दैट इट इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर। वाटर बॉडी की नैरो स्ट्रिप है जो कि दो लार्ज वाटर मासेस को कनेक्ट करती है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट एंड isthmus. ओके, सो एंड बाय द वे ये इधर एक युकातन चैनल है। ये गल्फ ऑफ मेक्सिको को कनेक्ट करती है कैरिबियन सी से। ओके, ये जो मेक्सिको है ना, तो मेक्सिको का ये जो पेनिनसुला है इट इज नोन एज युकातन पेनिनसुला एंड इट इज बिटवीन मेक्सिको के युकातन पेनिनसुला एंड क्यूबा के बीच में ये युकातन चैनल है। ओके, सो कमिंग बैक टू पनामा, सॉरी, इस्थमस ऑफ पनामा हमने सुना था एंड बिसाइड्स पनामा इज इन न्यूज क्योंकि ये जो पनामा कैनाल है it it is facing severe drought here. So countries are trying alternative route जो कि वो अटलांटिक को पैसिफिक से कनेक्ट कर सके फॉर ट्रेड एंड एवरीथिंग, क्योंकि यूजुअली पनामा कैनाल यूज होता है अगर आप यूएस में कुछ ट्रांसपोर्ट ट्रेड करना चाह रहे हो फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज और सम अदर कंट्रीज। तो इट इज फेसिंग सीवियर ड्राउट एंड बिसाइड्स आपको बता दूं एक फैक्ट कि पनामा अर्लियर वाज यूएस के अंदर एंड देन 1999 में यूएस ने इसको हैंड ओवर कर दिया था पनामा को एंड नाउ अगेन इट्स मेकिंग हेडलाइंस बिकॉज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज नाउ ट्राइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ पनामा कैनाल अगेन बिकॉज दे आर सेइंग दैट वी शुड हैव द कंट्रोल ऑफ दैट एरिया। ओके, सो ये हिस्ट्री थी पनामा की एंड व्हाई इज इट न्यूज। ओके, नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स डायरिन गैप। तो डायरिन गैप क्यों न्यूज में था 2023-24 में? बिकॉज ये एक स्ट्रेच है ऑफ माउंटेनस जंगल। ओके, काफी वाटरशेड फॉरेस्ट एंड माउंटेनस एरिया यहाँ पे एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल थ्रू दिस क्योंकि ये रोडलेस एरिया है। इट्स रोडलेस एंड इट इज वेरी vulnerable to robbery and acts of violence. तो जब लोग कोलंबिया एंड गुयाना और बोलिविया से क्रॉस करते हैं टू एंटर इलीगली इन यूएस, तो दे गो थ्रू दिस डार्जिलिंग गैप। तो अकॉर्डिंग टू मिसिंग माइग्रेंट प्रोजेक्ट एक सर्वे हुआ था जिसमें दे सेड दैट अराउंड 141 known deaths were reported in this Darien gap in 2023. So that's why this was in news. Okay, काफी deaths वगैरह हुई थी of illegal immigrants. So now we will come towards Caribbean Sea and Caribbean island nations. तो आप देख सकते हो ये काफी छोटे 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 आइलैंड्स हैं यहाँ पे एंड हमने ऊपर क्वेश्चन भी देखा था। तो जो क्यूबा है ना, इसकी कैपिटल हवाना है एंड इट इज द लार्जेस्ट सिंगल आइलैंड इन दिस कैरिबियन आइलैंड नेशंस। ओके, देन यहाँ पे हेती है, हेती की कैपिटल पोर्ट ऑफ प्रिंस है। जमाइका है जिसकी कैपिटल किंगस्टन है। डोमिनिकन रिपब्लिक है जिसकी कैपिटल सैंटो डोमिंगो है। प्योर्टो रिको है, सैन जुआन इसकी कैपिटल एंड यहाँ पे बहुत छोटे आइलैंड्स हैं जैसे एंगुला, सेंट मार्टिन, बारबुडा, एंटीगुआ, मॉन्टसेराट, डोमिनिका, मार्टिनिक, बारबाडोस, टोबागो, त्रिनिडाद, बहुत सारे छोटे छोटे हैं। ओके, तो इन्हीं आइलैंड्स में से हमने ऊपर ये क्वेश्चन देखा था विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स इज नॉट लोकेटेड इन द कैरिबियन सी? नॉट है तो ग्रेनाडा, मॉन्टसेराट एंड एंगुला यहाँ हम लोकेशन देख सकते हैं। एंगुला यहाँ पे है, मॉन्टसेराट यहाँ पे है एंड ग्रेनाडा यहाँ पे है। ओके, so the answer will be Madeira. Madeira is not located in the Caribbean Sea. For your information, Madeira is an island which is near Africa. Okay, and ये Atlantic Ocean में आएगा. It is in Atlantic Ocean. So out of these islands, जो डोमिनिकन रिपब्लिक है ना, इट वॉज इन न्यूज बिकॉज यहाँ पे वर्ल्ड का फर्स्ट स्पर्म वेल रिजर्व बना है। ओके, सो स्पर्म वेल
एक कैटेगरी ऑफ व्हेल है जो कि इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टूथेड व्हेल और टूथेड एनिमल। एंड इसमें ना आपको एक ये करंट की चीजें याद रखने की जरूरत है, एम्बर ग्रिस। सो एम्बर ग्रिस कभी भी आए ना तो जस्ट रिमेंबर दैट it is a substance, it is a waxy substance which is derived from this sperm whale. Okay, and this ambergris, it has a very unique scent, and इसलिए इसको perfume industry में बहुत ज़्यादा use किया जाता है, and it is very costly. Okay, but ambergris का use इंडिया में बैंड है because sperm whale हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आते हैं. Okay, and it is protected under that, so we can't use this ambergris for in the perfume industry in India. बट बहुत सारी कंट्रीज में इसको यूज किया जाता है. एंड दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन इन मॉक लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के मॉक्स में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ये क्वेश्चन था. ओके, तो बस इतना ही होता है. अगर आप कैरिबियन और इनकी सेंट्रल अमेरिका की बात करें तो नॉट लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, बट अगर एक दो भी आ जाए तो यू कांट अफोर्ड टू मिस इट. ओके, so that's it. In just 10 minutes, we have mastered the Central America and Caribbean island for our UPSC and state PSC examinations. Okay. And in fact, I will advise you to check Ghatna Chakra of this area and just consider कि हाँ क्या क्या questions किस तरह के आते हैं, because I have shown you this one of the questions which came in UPPCS 2021 paper. So just go through some PYQs. And yes, that's all. And don't forget to like this video and subscribe for more UPSC and PSC content. Thank you so much. Jai Hind.